गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। ये हमारा तीसरा दिन है व्लॉग का। राशिद भाई सो रहे थे, मैंने उनका फ़ोन उठा लिया और वीडियो स्टार्ट किए। आपको लेके चलते हैं राशिद भाई के रूम में। और ये राशिद भाई का रूम है और ये पड़े हुए राशिद भाई। और ये रहे सो रहे हैं हमारे यूट्यूबर साहब। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। नए सुबह का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त बिलाल भाई ने वीडियो भी बनाई थी, हम सो रहे थे उस वक्त। तो आज तीसरा दिन है हमारा फील्ड का, तो इंशाल्लाह आज चाइना बॉर्डर जाएंगे। अभी इस वक्त हम नाश्ता करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद हम अपने फील्ड पर जाएंगे। As everyone knows about the Indian plate marshes, इस तरह हमने Indies में पढ़ा है कि नास्का प्लेट सबडक्ट्स beneath the South American plates और उसकी जो वो है as a result we have Cordillera, ठीक है, जो Cordilleran mountain ranges है। The same thing happened here. What happened that during Jurassic there was a subduction zone. Okay. I can write this one is north. Subduction zone of the North New Thetis. New Thetis beneath the Karakoram microplate. Now Karakoram microplate is the part of the Gondwana land, right? And it is called Sumerian block. That was a Sumerian block that drifted away or drifted from the Gondwana and started its northward drift towards the southern margin of the Eurasia. So what happens that when the collision took place here, the basement rocks, right, or the of the Karakoram as Peranices. They are Peranices basement rocks, and these when the subduction took place here, so because of the melting of this one, we have a magmatic arc here, formation of the magmatic arc, and that magmatic arc is the pre-collisional Karakoram batholith. यहाँ पे इसको कहते हैं हुंजा batholith। और यहाँ पे अगर आप क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे एक्सपोज नहीं है, बाकी जगह पे भी एक्सपोज है टूवर्ड्स द ईस्ट और वेस्टर्न साइड पे, तो इन सब को कहते हैं कराकोरम प्री कोलिजनल बैथोलिथ। यहाँ पे जो बाकी फॉर्मेशन है वो पर्मियन के है, ठीक है, पर्मियन। और यहाँ पे कोई बैक आर्क वो नहीं है, स्प्रेडिंग नहीं है कि जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शंस हो या कोई MOR बना हो। सो ऑलरेडी द कोलिजन वाज विद द सदर्न मार्जिन ऑफ द यूरेशिया, उसके साथ इसका कोलिजन हुआ था, सदर्न मार्जिन ऑफ द यूरेशिया। तो आप अच्छा, ये जहाँ पे आप
इस लिथोलॉजी पे जो हम यहाँ पे खड़े हैं, these are the Karakoram Pyrenees, ठीक है। और इसमें Pyrenees में Barovian metamorphism है, ठीक है। Here you can see mica, then you can see garnet, starolite, kyanite, seliminite. So all sort of the index minerals that represent Barovian metamorphism are reported from this one. One of my PhD students, he is working on the Pyrenees of Karakoram, जो Karakoram microplate है। अगर हम उसकी तरफ जाएं, इसकी तरफ, तो दासुडोम जो है, दासुडोम वो भी इसी प्लेट के अंदर है और उसमें मैग्मेटाइट है। मतलब है कि डोम के जब रॉक्स आते हैं तो वो बहुत डीप सीटेड रॉक्स को ऊपर लेके आते हैं। सो दे आर मैग्मेटाइट, मतलब इसका पार्शियल मेल्टिंग हुआ है और वहाँ पे सेलेमिनाइट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फिक ग्रेड है वो 600 से लेकर 650 तक पहुँच गया है। और इसका जो मेटामॉर्फिज्म है, इसके मेटामॉर्फिज्म जो है एक 100 mm पे है, रिपोर्टेड है, और दूसरा जो है जो कोस्तान आइलैंड आर का और कराकोरम का कोलिजन हुआ है, उसके भी एम्प्रेट्स इन्हीं रॉक में प्रिजर्व्ड है, ठीक है। हमने एक चीज़ मिस की है, कराकोरम जो मेन कराकोरम थ्रस्ट है, जो कि सूचर, इसको शयोक सूचर जोन भी कहते हैं, वो हमने आज ये मिस किया बिकॉज इट वाज टू लेट। तो शयोक सूचर जोन जो हम कहते हैं कि अगर आप सबडक्शन ले लें तो वी हैव ट्रेंच एंड देन 4 आर्क बेसन, और फिर उसके बाद जो है कॉन्टिनेंटल क्रॉस और उसके अंदर मैग्मेटिक आर्क है। तो उसका जो 4 आर्क बेसन है उसका मिलान जो है वो प्रिजर्व है, जिसमें टर्बिडाइड्स है। यू नो अबाउट टर्बिडाइड्स के स्लोप है, और स्लोप के ऊपर जब सेडिमेंट्स आते हैं तो वो बूमा सीक्वेंस बनाते हैं। जो ग्रेजुअल जो हेवियर मटीरियल्स होते हैं तो वो पहले बैठ जाते हैं, कोर्सर मटीरियल फॉलोड बाई, और फिर फाइन हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास पूरा ओफिलेटिक सीक्वेंस एक्सपोज है, जिसमें सरपेंटीन भी है और ये सेडिमेंट्स भी है, ठीक है। तो दैट्स द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रीजन, और इसको कहते हैं बल्टीट ग्रुप मेटासेडिमेंट्स। आप लिखते हैं बल्टीट ग्रुप मेटासेडिमेंट्स। इसका एज जो है वो प्रीकैम्ब्रियन है। सो बल्टीट ग्रुप मेटासेडिमेंट्स, प्रीकैम्ब्रियन एज। We were traveling from Raikot towards the Gilgit area. The first unit was Koistan Batholith. You'll see that tomorrow. Followed by the Chalt Volcanics, and then the Yasin group Metasari. Mainly, this Karakoram region is divided into 3 portions, 3 major units. The southernmost unit is called Southern Metamorphic Complex, which we are now observing. This is called Southern Metamorphic Complex, which is consisting mainly of Pyrenees. There are schists, and they have been intruded by these pegmatite veins. Okay. The central unit we will observe at the second stage, second stop, is the Karakoram Batholith, right? Which is the result of intra-oceanic subduction, which is the result of the continental ocean subduction. ठीक है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसकी कर लेंगे फिर हम आगे जाके। In the northernmost zone, that is called the northern sedimentary terrain. The northern sedimentary terrain. So while going from south to north, the first unit is Southern Metamorphic Belt, then the Karakoram Batholith, then the northern sedimentary terrain. And the northern sedimentary terrain is again divided into different formations. That's a regional picture of the geology of the Karakoram Asian plate.
was actually at the southern metamorphic block of the Karakoram plate, right? Which we know that they are mostly perenices, there are some schists, okay, and they have been cross-cutted by the pegmatite veins, pegmatite dikes, right? This body, the Karakoram batholith, is part of the Karakoram axial belt, which I already mentioned. It extends from Tibetan Indian areas, passes through the North Pakistan, Gilgit, and then Chatral and Afghanistan. So it's a huge belt of around about 700 kilometer, having an east-west direction. Right now, the Karakoram batholith rocks have been subdivided into different rock units in this region, and they are named as Hunza Plutons. Major portion is Hunza Pluton, which is this one. It is the oldest unit, Cretaceous oldest unit, and this is the subduction related Indian type of granitites, similar to the main body of the Kohistan batholith. Okay? Along with these units, there are some other units which are called Batura granitites, Pluton, which is further to the west of this Hunza Pluton. Okay, and then some other smaller unit, Baltoro plutonic unit, Baltoro plutonic unit, and Hushi gneiss, granitic gneiss. These four are the major units. Now, tectonically, how did they originate? These two units, Hushi gneiss, perenice, and the Hunza granitites, which form the major bulk of this batholith, is pre-collisional in nature. It's pre-collisional. They formed when the Tethys Ocean started subducting beneath the Karakoram plate. Before the Karakoram and the K collision, there was a subduction zone जो कल भी पूरा मैंने डिटेल में बताया था आप लोगों को. So this is Karakoram in the north and the Tethys Ocean in the south. Subduction started taking place before this region. Subduction took place, and as a result of that, the magmatism started taking place. So what type of magmatism? How did this magmatism started? Because of subduction, fluid was released to the mantle rock, right? Yes. So the fluid released, what happened when fluids are released to the mantle rocks? Yes, temperature, melting temperature gets down, and as a result, partial melting of the mantle rock takes place, which forms magma, and that magma started forming the main Hunza Plutons or the Karakoram Plutons. Okay? There are some other scenarios. Okay? It could also be because of the subduction of this oceanic plate, partial melting of this subducted plate, and as a result, the granitites will form. For that, we have to look, in order to prove कि आया ये सबडक्टिक प्लेट की मेल्टिंग की वजह से बने हैं या ये फिर मैंटल रॉक्स की पार्शियल मेल्टिंग की वजह से बने हैं, इनके फिर अलग सिग्नेचर्स होती है, ठीक है ना, पेट्रोजेनेटिक सिग्नेचर्स. उसके लिए हम हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज करते हैं, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज करते हैं, इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स और कंपैटिबल एलिमेंट्स यूज करते हैं. Among the other plutons, the Baltoro granites, they were formed purely when KIA collided with the Karakoram plate. So what happened due to that collision? When KIA collided, collision took place. KIA, the intervening ocean got consumed, and because of this collision, what happened? Yes, the temperature, pressure increase, the crustal thickening take place, and ultimately the Indian plate in the further south also collided with this Karakoram, with this KIA and Karakoram plate.
and further shortening in thickness took place. And as a result of that thickening, partial melting of the crustal rock took place, जो शैलोवर जोन में थे, और इनकी वजह से ये बाल्टोरो ग्रेनाइट्स बने, जिसकी एज तकरीबन कोई 20 MA से लेकर 4 MA तक है। तो ये शो करते हैं कि ये उस टाइम बने थे जब कंप्लीट इंडिया और KIA और यूरेशियन प्लेट पूरे तीनों एक दूसरे के साथ अमलगमेटेड हो गए थे। पेट्रोजेनेटिकली दीज हुंजा ग्रेनिटाइट्स दे आर calc-alkaline in nature, they are calc-alkaline, ठीक है, met aluminous, ठीक है, and this chemical composition, when you plot them in the tectonic diagrams specified on the basis of trace elements, so they are plotting in the continent ocean subduction environment, जिसको हम कहते हैं Indian type of magnets. So that's actually the story about the Karakoram Valley. क्विक में एक आपके लिए वही बनाता हूँ एक डायग्राम. दिस इज आवर नाम. आ जाए. ओके, यहाँ पे beneath the Karakoram plate subduction zone of the new thetis. फिर यहाँ पे आपने Peranisis, यहाँ पे we saw a magmatic arc, so that is a magmatic arc. Magmatic arc. और यहाँ पे हमारे पास जो रॉक्स है वो परमियन और कार्बोनिफेरस और ट्राइसिक एज के है. ठीक है. तो नीचे जो है दैट इज दी पासू स्लेट्स, और उसके ऊपर जो है वो है गिरचा डोलोमाइट. गिरचा फॉर्मेशन लिखते हैं. तो गिरचा फॉर्मेशन. सो हियर यू सी पासू स्लेट. ये सामने आपके जो है ये पासू स्लेट्स है. ठीक है. दीस आर द मोनोटोनस स्लेट्स. जो शेल्स थे और शेल्स मेटामॉर्फोज हो गए तो स्लेट्स, वो बहुत हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म नहीं है. ठीक है. तो इन स्लेट्स ने सरवाइव किया है जो कोलिजनल मेटामॉर्फिज्म है ऑफ द क्वेस्टान आइलैंड आर्क विद द कराकोरम माइक्रोप्लेट, और बाद में जो इंडिया का कोलिजन हो गया एमलगमेटेड कराकोरम और जो क्वेस्टान आइलैंड आर्क है. तो इसमें वो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म नहीं है. ठीक है. अब व्हाट इज द रीजन? देयर कुड बी टू रीजन. एक रीजन ये है कि मे बी ये ऑलरेडी थ्रस्टेड थे above the अर्थ सरफेस थे या लोअर क्रस्ट में थे. तो लोअर क्रस्ट में मेटामॉर्फिज्म बहुत हाई नहीं होता है. इट शुड बी वेरी डीपर कि मेटामॉर्फोज करते. इसके जो बेसमेंट रॉक्स है वो दो जगहों पे एक्सपोज है. एक जो पैरानाइसिस आपने देखे वो इसके बेसमेंट रॉक्स है, और एक दासू डोम में जो मैग्मेटाइट है, जो आर्कियन रॉक्स है, जो प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स है, वो एक्सपोज है. ठीक है. वो यहाँ पे एक्सपोज नहीं है. इसके ऊपर अगर आप देखें ये जो स्ट्रैटिग्राफिक सेक्शन है इसका कलर देखें, इट्स टोटली डिफरेंट. दिस इज गिरचा फॉर्मेशन. इट कंसिस्ट ऑफ डोलोमाइट, अर्जिलिशियस डोलोमाइट है, और प्लस इसमें क्वार्ट्जाइट है. ये जो आपको जो स्क्रीन नजर आ रहा है या जो स्लोप के ऊपर जो मटीरियल नजर आ रहा है, दिस पॉसिबली ऑफ डोलोमाइट, सॉरी ऑफ क्वार्ट्जाइट, क्योंकि क्वार्ट्जाइट जो है बहुत हाईली ब्रेटल है. ठीक है. तो ये है. और अगर आप कंटेक्ट देखें नीचे पासू स्लेट्स है और उसके ऊपर जो गिरचा फॉर्मेशन है. वेरी वेरी क्लियर कंटेक्ट एक्सपोज ऑफ स्लेट एंड गिरचा फॉर्मेशन. ठीक है. ये जो स्लोप है दैट कुड बी लाइक एन एंटीक्लाइन. आपके पास यंगर रॉक्स है, फिर उसके कोर में ओल्डर रॉक्स है जो स्लेट्स है, और फिर उसके ऊपर यंगर रॉक्स है. यंगर ओल्डर यंगर यू कैन सी दैट कंटेक्ट वेरी इजीली. ठीक है. वेरी वेरी क्लियरली मार्क कंटेक्ट है. सो इट लुक्स लाइक ए लोकल एंटीक्लाइन. आपके इस साइड पे द वर्ल्ड फेमस पासू ग्लेशियर. ठीक है. ये थ्रू द ईयर होता है. दिस इज ग्लेशियर, परमानेंट ग्लेशियर है. तो दिस इज पासू ग्लेशियर. 4 आर्क बेसन
और ये जो है ये बैक आर्क बेसन, बैक आर्क बेसन। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये बैक आर्क बेसन बिल्कुल इसमें कोई स्प्रेडिंग हमें नजर नहीं आ रहा है, ना हम कोई डाइक देख रहे हैं, ना हम कोई वैन देख रहे हैं, ना हम कोई और चीज देख रहे हैं। ये पॉसिबल है कि मे बी नीचे जो फेरानाइसिस है उसमें सिग्नेचर्स हो उसके स्प्रेडिंग की, मगर रेफ्टिंग की या स्प्रेडिंग की, मगर टॉप साइड पे कोई वो नहीं, जिसका मतलब है कि इसमें कोई टेक्निकल या कोई मेंटल वो इन्वॉल्व नहीं है। Behind is the Punjab granodiorites, and you can see the color variation. This color variation is because of the some leaching of the mineral. The less resistant minerals are left behind, and due to oxidations, you can see this beautiful color. So this yellowish color is due to the sulfur. So it gives us indication that there is some sulfide mineralization. And in geology term it's called gossan. So you can see the gossan, the mineralization that so far no one has worked on it, is maybe in the subsurface, but the weathered part of the gossan has acquired this yellowish color. The age of the granite is Cretaceous, and this is within the Karakoram microplate. So it's a beautiful terrain. It's a natural national park, Punjab National Park. So you can enjoy the beauty, you can see the glaciers and all these alpine glaciers. Thank you very much. पाकिस्तान दोमره بدنصیبه هوا